हुई और आपका आज की वीडियो में स्वागत और है। आज वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है 7 शॉकिंग कल्चर शॉक आई हैड इन इंडिया, माई लाइफ इन इंडिया। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि कौन से कल्चरल शॉक उनको लगे हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करके लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉग चैनल का लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करके लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हेलो मेरी दोस्त मेरी दोस्त पता है ना, I stayed in India for 4 years and nowadays I'm missing my life थोड़ा in India. So I decided to make a vlog which I can tell you about interesting points when I stayed in India. चलो मैं start कर रही हूँ। Wild animals in neighbors. In Korea, it is really difficult to see wild animals, even wild dogs. You can only see कोरिया सही है। pets. There are dogs on the streets you can see, Cute. but they are owned by people. So when we visit zoo, then we feel so excited to see animals, wild animals, such as elephants, monkeys. We are so happy to see them, and especially Bache really loves watching animals. When I was very young, I loved it. You know, when I came to India, I was really surprised that you could easily see wild animals in your neighbors. There were monkeys. Okay. Monkeys? मतलब langur. Elephant मतलब hatta. Or horse and camels. अच्छा। Pigs. हाँ। Oh, I forgot cows even. When I participated in a wedding, I could see a horse अच्छा। with a guy. He was वहाँ पे नहीं ना होगा हमारे घोड़ी। एक ट्रेडिशन है ना। हाँ, घोड़ी डांस कर रही है। डांस कर रही है उतर के। Many people dance were कर रही थी। dancing with groom like this, and also the groom was riding an elephant. ज्यादा अमीर होंगे। You can never imagine this scene in Korea. During the COVID, when I came out from the house, there were peacocks. Oh, it was really amazing moment that I could see peacocks just in front of your door. When I was working in one Korean company in India, there was my Korean colleague, and she was staying in somewhere, and there were langur. So one day, the langur यार मंकी को लंगूर बोलते invaded हैं क्या? my colleague's house and took हम तो something वैसे बंदर shiny. बोलते हैं। So after that day, my colleague was both gussa, and at that moment I understood that why there is a langur wala. Actually, langur wala holds a stick, lambi stick, and try to hit the monkeys so that they can be get rid of from that area. Friendly to foreigners. Indians are really friendly to foreigners. So when I visited National Heritage, Qutub Minar, or what is that? Taj Mahal, Red Fort, or people were coming to me and asked me to take photo together. So I felt sort of weird, but at the same time, I felt I became a celebrity. I would love to take picture with them. So even there was a queue to take picture with me. Okay, agla. When I was in trouble, they were willing to help me. When I lost when I'm lost, or when I was trying to find somewhere, they were really helpful. So even without being paid anything. So that time I felt, Indian people are so helpful and so kind. I believe maybe those people kind. Indians love their culture and traditions and patriotic. In Korea, when you visit a palace, then you can see some people are wearing the traditional clothes, which is called hanbok. Because while wearing that, you can enter the palace for free, and also the pictures are really nice. But in India, you can easily see people wearing saris or kurta and paijami. So I felt they are really loving their culture and their traditions. And even when I see their weddings, I could feel that this is their traditional format. Because in Korea,
the wedding and some performances are because westernized, but in India still they preserve their own culture. Maybe some people want to be modernized or westernized, but as a foreigner, I could feel that it looks really nice and touching moment to see how they want to preserve their culture and tradition. And I felt Indian people are very patriotic. One time I went to a movie theater and I was waiting for the watching movie. Suddenly people stood up Okay, and national there was a anthem. national anthem. Like Jaya Hai, Jaya Hai, Jaya 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 Hai. So I was really surprised to see that people are standing and they were singing the national anthem. In Korea, I think around 30 years before, yeah, it was performed as like Maybe that. हैरान But थी क्या? nowadays, oh, you can never see that. And I felt Indian people love their nation and they feel so proud of themselves because when I eat something Indian food or when they see something related to India, and even when I speak in Tora Hindi, no, Tori Hindi, then they feel so proud of it and they feel so good that a foreigner is speaking Hindi and also a foreigner is enjoying culture. मान तो लाडला. बिगड़ गया. Security check. So when I visited India and I was trying to enter a building and there was a security person who's checking my stuff and even body. He was checking my body like this. So I felt, what is this very special building? And I got to know later that it is just a normal place and this is normal security checkup. And even when I tried to take a metro, in morning man, sube, there was a long queue even outside the metro station. But always there was a long queue only in Gai side, Larka side. But very short queue in Larki side. So I was thinking, "ये क्या है?" I got to know that even to take a metro, you need to be checked up. So one person is checking your stuff while with the conveyor belt, and the other person checks your body, like this. At the first moment, it was a little embarrassing because someone touches your body like this. Even though it is larga to larga, still it is a little weird. But after some time, I became familiar to it, and even I learned Torasa Jugar as well. So when there is a long queue in Larka, I give my stuff to my Larki colleague so that she can take my stuff to the short queue. So you can easily pass the long queue in the short moment. Jugar. मेरे दोस्त जुगाड़ पता है ना? The mother of jugar. In Korea, the formality is really important. So even though there is a way to go faster, still Korean people follow the formality. Okay. Seeing that, yeah, it is. You can say it is organized, but sometimes jugaad is required, and I learned it in India. When you're in trouble, Indian people always find out a jugaad, the way to escape from that situation. So when there is something broken or if you just follow the formality, you can never reach at the goal. But Indian people always finds out the way to cut in and to go faster, which is called jugaad. And nowadays, I utilize this jugaad in Korea so that I can easily solve the problems. Bridos, please tell me, what is your favorite jugaad? Indian people love dancing. I feel Indian people love dancing. When Korean people drink together, then they go to karaoke to sing because Korean people love singing. But Okay. after drinking, Indian people go to a club and they dance together. Not just for a few minutes, for a whole night. And I felt they are so energetic and they love dancing. When I joined my colleague's wedding, I could see so many people dancing together. The stage was not so bora,
but everyone was coming over on the stage and dancing together. But to elder people, grandma, grandpa, even they were surrounding me and they taught me how to dance. Even one of my friends taught me how to dance. He said I just need 2 fingers. एक, दो. Okay. Okay, ऐसे ऐसे. Make it. हाँ, भंगड़ा. And then shake it. Shake it. And this was the starting point. I learned Indian dancing. And I could feel that Indian people know how to enjoy. Enjoy their lives and enjoy the moments. Unlimited honking. Honking. Ping ping pam pam. Unless it is really emergency case, we don't honk. But when I visited India, I could hear unlimited honking. So I thought, why do they honk a lot? I thought that okay, there is safety. First, there is not proper line to drive, so there may happen a accident. You cannot easily see all the cars nearby. So while honking, you can let them know that you are nearby and you can secure yourself. I think that was the reason they honk unlimited. Initially, it was a little weird and I couldn't digest it. But after some time, maybe my hearing power is stronger, so I could endure it. Having meals very late. In Korea, normally we have breakfast around 7 and lunch around 11:30 to 1 p.m. maximum. Wow. Dinner around 6 Very to 7. nice. When I was working in an Indian company, we were supposed to have dinner together. I thought, okay, maybe we will have dinner around 6 or 7. I was waiting for that time, but even after that, there was no one to ask me to have dinner. So I was thinking, and I was feeling so hungry. But around 8 to 9, they were saying that, okay, let's go for dinner. So when I arrived at the restaurant, it was already 9 to 10 p.m. I was really surprised that how can they have dinner at this time? And I asked them, what time do you sleep? And they said 11, 12, just after dinner. I was not used to having dinner very late. So that was interesting point. But after some time, I also became familiar and I had breakfast around 9 a.m. Dinner also around 8 p.m. Chalomeridos. These are the points I felt very new and interesting when I stayed in India. I hope you liked my video. And soon, I'm gonna visit India. So when I visit India, Meridos will also welcome me, no? Chalo saath. Bye karo. Bye. भाई जितनी भी बातें उन्होंने वीडियो की है मेरा ख्याल है कि हम लोगों के लिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें ना बहुत नॉर्मल है, शादी से लेकर खाने तक, डांस तक, क्योंकि हर बंदा अजीब तरह का डांस भी करता है ना शादियों में कई बार, तो हर चीज़ मेरा ख्याल है कि हमारे लिए काफ़ी नॉर्मल है चीज़ें। हमारे लिए नॉर्मल तो ज़रूर है, बट मुझे इंटरेस्टिंग ये चीज़ लगी कि हमें कोरिया के बारे में पता चला कि वहाँ के लोगों का क्या रहन सहन है, किस तरीके से वो लोग रहते हैं। वैसे मुझे सच में लग रहा है कि वो लोग बहुत डिसिप्लिन लोग हैं। लाइक तुम देखो स्पेशली जो खाने का उनका जो एक लाइफस्टाइल पता चलता है कि 7 बजे उन्होंने नाश्ता कर लेना है, फिर 11:30 से 1 बजे के दरमियान में लंच है, फिर 6-7 बजे तक डिनर है। हमारे यहाँ पर 6-7 बजे तक अगर डिनर हो जाए, लाइक बड़ों की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि हम तो अब आकर ये चीज़ें लर्न कर रहे हैं, तो वो लोग कहेंगे कि भाई हमें तो लेट नाइट भूख लग जाएगी, तो हमें तो खाना है और खाना है। सो ये हमारा एक माइंडसेट है यहाँ पर कि हम लोग ना खाने के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि मुझे लगता है कि हम लोगों को लगता है कि कुछ भी हो ना हमारे लिए, इवन कि मैं अपनी भी बात करती हूँ कि हम लोगों को ना खाना खाकर बहुत खुशी मिलती है। ये हमारे यहाँ के लोगों की आदत है यार। हमारा हम खाना ना खाएं तो क्या नाम लेते हैं, हमारे सर में दर्द शुरू हो जाती है। खाना खाते साथ ही जो है ना थोड़ी देर बाद जब वो आपके पेट में पहुंचता है ना, आपकी सर दर्द भी जो सही हो जाती है। इतना हम खाने से जो है ना जुड़े हुए हैं क्योंकि हमने अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को वैसे ही ट्रेन किया हुआ है। बिल्कुल। लेकिन जो बीच में उन्होंने
आपने जानवर वाली बात की तो नो डाउट इंडिया में आपको जो है जैसे देखा जाए कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पर आपको बंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आते हैं, वरना बाकी मेजोरिटी शहरों में देखें तो आपको जो है ना नॉर्मल जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो तो नज़र आते ही आते हैं, तकरीबन हर शहर में वो आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन ये हैरियत की बात है कि भाई आपको कोरिया में सिर्फ पेट्स ही दिखाई देते हैं, उसके अलावा और कोई भी नहीं। मौसम वैसे मैं तो कह रही हूँ कि मुझे तो ऐसे ये जितने भी थे मुझे तो वाइल्ड एनिमल्स लग ही नहीं रहे थे, क्योंकि हम लोग तो यूज्ड टू है ना, मतलब ये देखने को। हाँ। तो मुझे लगता है कि हमारे लोगों को इतना नहीं लगता। हम लोगों को देख ले चिड़ियाघर जाके कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। वैसे ये बात तूने सच की है, लेकिन बच्चों को ना एलिफेंट को देखकर हमेशा हाँ। एक एलिफेंट को देखकर, लायन को देखकर, चीता देखकर भी बच्चे जो है मतलब खुश होते हैं, मोर को देखकर भी खुश होते हैं। बट एक चीज मैं बोलूंगी कि देखो हमारे यहाँ पर हमारे पास इतना कुछ करने के लिए ना, हमारी फैमिलीज बड़ी बड़ी हैं, और अगर आप बाहर दूसरी कंट्रीज को देखो तो उनकी फैमिलीज लाइक जैसे हमारे यहाँ पर जॉइंट फैमिलीज भी होती हैं, तो वहां पर आपको जॉइंट फैमिलीज भी नहीं इस तरह से नजर आती। तो मुझे लगता है कि इसलिए वो ज्यादा पेट्स रखते हैं, क्योंकि वो अकेलापन जो होता है ना वो भी दूर करना होता है कहीं ना कहीं। शायद हो सकता है। वैसे मुझे पेट्स पसंद है, मुझे भी पपी पसंद है, लाइक घर में रखना। मुझे बिल्लियां पसंद है। लेकिन मसला ये है कि हम दोनों ही नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे घर वालों को बहुत डर लगता है। नहीं वैसे तो मुझे क्या नाम लेते हैं, मुर्गियां भी जो है रखना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन ना गंद बहुत डालती हैं तो इस वजह से वो ज्यादा। तू भी डालता है, वो भी डालती है, दोनों ही के कमरे में रहना। वो ना आपके पास चलो कच्ची जगह हो ना थोड़ी सी, या थोड़ा सा लॉन वगैरह हो, तो उसमें जो है मुर्गियां फिर भी एडजस्ट कर जाती हैं, साफ रहेगा, चलो वो घास को भी खाद वगैरह जो है मिलती रहेगी। लेकिन जो है ना घर के अंदर जो है ना वो हग जाएगा तो फिर थोड़ा काम खराब हो जाता है, घर वालों के मूड जो है ना स्विंग फिर बहुत जल्दी होते हैं। तो सफाई रखना ना, बिल्कुल भी नहीं स्विंग करेंगे। अब इतनी सफाई, एक उधर कर रही है एक उधर कर रही है, कौन इतनी सफाई रखे, और काम नहीं करने। मौसम खुद को साफ रख ले, बड़ी बात। खुद को साफ रख ले, बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। फिर भाई अगर एक बात करूँ, हमारे यहाँ पर वाकई में ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी बात की थी, कोई भी विदेशी आता है तो हमारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमने पिक्चर लेनी है, उनसे बातचीत करने की बड़ी एक गर्म जोशी होती है। हालांकि मैं ये बात देखती हूँ, अगर आप बाकी कंट्रीज में जाते हो ना जब ट्रिप पर, उन लोगों में हमारे जैसे वाली कोई गर्म जोशी यार वो तो देखते भी नहीं है मुंह उठा के कि कौन आया कौन नहीं आया, डिफरेंट लग रहा है शक्ल से। हमारे जैसे तो बाइक भी चला रहे हैं, बेशक आगे जाके किसमें लगे, लेकिन एक बार देखना है वाह फॉरनर आया हुआ है। तो हमारे यहाँ पे ये सब है, वहाँ पे तो भाई आपको यूं भी करके नहीं किसी ने देखना कि भाई कोई है कि नहीं है। हाँ एक चीज जो है जिसे फॉरनर और बहुत ज्यादा हैरान होता है हमेशा, जो आपको तकरीबन हर फॉरनर की वीडियो में सुनने को मिलता है, हॉन्क। हाँ वो तो हॉर्न बहुत बजाते हैं, इवन के क्या नाम लेते हैं, ये तो हमारा फर्ज है। हमारा ये फर्ज है कि हमने आगे कुछ भी ना हो हॉर्न जरूर बजाना है। हाँ मुझे ऐसा लगता है हमारे लोगों को कि ना ये घुट्टी में बैठ गया हुआ है कि जैसे जैसे बड़े हो रहा है, क्योंकि हालांकि मैं ये बात सोचती हूँ कि हम लोग शुरू से यहाँ पर रहे हैं, और हमारे जैसे और बहुत सारे लोग होंगे जब वो बाहर निकलते होंगे तो उनके कानों को इरिटेशन होना शुरू हो जाती होगी हर टाइम पे, पी पी पापा। मैं तो मौसम के साथ जब जाती हूँ ना समटाइम्स तो मैं वाकई में गुस्सा हो जाती हूँ। रिमेंबर मैं कहती हूँ पागल हो गया ये आदमी, इसका दिमाग खराब है, इतना ज्यादा हॉर्न दे रहा है। सुकून के यहाँ पाकिस्तान में रह रही, यहाँ पे ये आदत है। और मुझे लगता है हॉर्न इजाद भी जो है ना इनके, उसकी जो इन्वेंशन हुई थी वो हमारे जैसे लोगों के लिए हुई थी कि बजाते रहे, कोई कुछ भी हो बस बजाते रहे। लेकिन ये बहुत गलत कल्चर है। मैं खुद इस चीज को एडमिट करती हूँ। मुझे लगता है कि ये चीजें जो है ना वो लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए, बट पता नहीं कब आएगी। हमारे लोगों में तो बहुत ही टाइम हो गया है कि मुझे तो कोई बेहतरी लगने की उम्मीद ही नहीं आती। लेकिन खैर एनीवे और बढ़ते हैं, डांस को लेकर बात करें तो मुझे लगता है कि हाँ मुझे इंडियन जो वेडिंग्स हैं मुझे अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए लगती हैं क्योंकि हमारे नो डाउट हम जैसे मेहंदी वगैरह करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जैसे बारात लेकर जाना होता है, लोग सड़कों पे डांस करते हैं, फिर इतने ज़्यादा लोगों को इनवाइट किया जाता है, खाने का मेन्यू बहुत बड़ा होता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये मुझे लगता है कि काफ़ी आपको ना एक मतलब डिफरेंट नज़र आती हैं, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से यहाँ पर जो चीज़ें देखी हैं हम लोगों ने इतना ज़्यादा नहीं देखा कि लोग इतना पुराने टाइम में बनाते होते थे जब वन डिश वाला एक टाइम नहीं था उस टाइम पर। लेकिन ये है कि अब आकर अगर मैं देखूँ ना तो अब तो ये चीज़ बिल्कुल भी आपको नजर मुझे जो है ना इंडियन शादियों में एक चीज़ है ना बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि भाई नो डाउट पैसा वो बहुत खर्चते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना जैसे हम लास्ट एक ब्लॉग देखे जिसमें छतरियाँ
लेकर जा रहे थे साथ लाइटों वाली छतरियाँ, वो चीज़ें क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलती। ये चीज़ें हमें बड़ी अच्छी लगती हैं कि यार इस तरह की वेडिंग जो है ना बंदा कभी जिंदगी में अटेंड करे। यार देखो आप इंडिया की जो शादियों का जो सीजन है उसमें इतना ज्यादा वो पैसा कमाते हैं, एक पूरी एक इंडस्ट्री बन गई हुई है। तो यार देखो सॉरी आपको इंटरप्ट कर दिया है। हालांकि पहले जो है ना शादियां होती थी ना तो पूरे मोहल्ले में क्या होता था, वो एक गली के अंदर लाइट लगाते थे वो, अगर आपको याद हो कि भाई इस गली में जो है ना शादी हो रही है। अब वो कल्चर वो भी खत्म हो गया। चूना भी फेंकते होते थे बट जब मतलब जैसे जहाँ से बारात आनी होती थी वहां से लेकर उस जगह तक जहां पर उन्होंने बैठना है तो सफेद चूने के साथ ना साइडों दोनों पट्टियां बनाई जाती थी। पता नहीं वो भी एक वीआईपी प्रोटोकॉल होता होगा उस टाइम का, या उस टाइम का कल्चर होता होगा, लेकिन अब तो खत्म ही हो गया वो भी। चीजें नहीं होती बट मुझे लगता है कि ये चीजें वैसे काफी मजे की हुआ करती थी। बट हाँ उस टाइम पर ना लोग पंक्चुअल नहीं हुआ करते थे, ये मैंने देखा है। क्योंकि खाना अगर लेट हो रहा है तो बहुत ही लेट हो रहा है, बारात लेट आ रही है तो बहुत ही लेट आ रही है। तो जब से ये टाइम सेट कर दिया गया ना, इससे लोग काफी ज्यादा पंक्चुअल। वैसे टाइम सेट करना अच्छा है कि टाइम सेट होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंड होना चाहिए। 10 बजे बहुत ही कम है, लेकिन उसके साथ में 1 डिश से भी ज्यादा आप कर सको इसकी भी इजाजत होनी चाहिए। वैसे मुझे ये सही लगता है, मैं सच बोलूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते। इवन के 1 डिश भी अफोर्ड करना उनके लिए मुश्किल होता है। लेकिन क्या है फिर सोसाइटी का प्रेशर, आगे से लोगों का प्रेशर, बेटी की शादी अच्छी होनी चाहिए तो बेटी वालों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से ये चीज सही है। हाँ बाकी अगर किसी के साथ, क्योंकि जब होता था ना फिर लोग यहाँ पर क्या करते थे कि पैसे बोरो कर करके तो चीजें जो है वो मतलब आप इतने कर्जा अपने ऊपर ले लिया, तो मुझे लगता है फिर वो चीज गलत है। जितने पैसे हैं जितनी हैसियत उसके मुताबिक आप काम करें, लोग जो भी साइड पर करें। एनीवे जैसे उन्होंने शादी पर बताया, अगर हम लोग ज्यादातर फॉरेनर्स की शादियां तुम देखो एक ही दिन का मुझे लगता है उनका सेटअप रहता है, और उसमें भी वो एक बड़ी आराम से वो पार्टी कर के और उसके बाद चर्च में जाते हैं। और नहीं जो लोग चर्च में मतलब ठीक है, उसके बाद भी तो तुम देखो ना होता है, जैसे किसी ने बीच पे कर लिया, किसी ने ऐसे ओपन एरिया में कर लिया, तो बड़ा खूबसूरत है। ये वेस्टर्न आपको इन्फ्लुएंस नजर आता है। लेकिन हाँ ये मैं जरूर बोलूंगी कि यहाँ पर आपको एक कल्चर एक नजर आता है कि लाइक आप शादियां जो इतने दिन तक अटेंड करते हो। यार पहले वाली शादियां ज्यादा अच्छी होती थी, जिसमें सारे रिश्तेदार जो है ना इकट्ठे होते थे, 3 4 दिन पूरा हफ्ता जो है ना शादी चलनी। अब तो खैर बहुत ट्रेंड चेंज हो गया। खैर वो ये इंडिया में अभी भी आपको जो चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं कि लोग जो है इकट्ठे होते हैं, एंजॉय करते हैं, मजा आता है। शादियां होनी इसी तरह चाहिए। यार बस मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि लाइक आप लोगों की शादियों पर भी कलेश पड़ते हैं क्या रिश्तेदारों के? हाँ बड़े मुझे बताया था किसी ने कि बड़े कलेश पड़ते हैं। वो जो हमारे यहाँ पे ट्रेंड चलता है ना, बुआ फुफ्फड़ नाराज होके बैठ जाते हैं, वहां पे भी चलता है। ओके ठीक है, फिर सही है। एनीवे गाइस ओवरऑल मैं कहूँगी काफी मजे की वीडियो थी, अच्छी लगी कि लाइक एक तरह से जो उनके लिए नई चीजें थी वो उनको लाइक मतलब उन्होंने उसमें वीडियो में बताया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम जो यहाँ के लोग हैं ना, हम लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं फॉरेनर्स से मिलकर, लेकिन जब आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हो तो आपको पता चलता है भाई सब नॉर्मल लेते हैं, तो आप भी नॉर्मली रहे इन चीजों को। एनीवे गाइस हमारी आज की वीडियो इसी के साथ है। वीडियो चैनल करें, वीडियो गुड बाय।